बात करने के लिए हमारे साथ है कल्की केकला जी। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। मैम, आपका मिडडे में स्वागत है। थैंक यू रुपेश। थैंक यू मैम। मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। सबसे पहले थैंक यू कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में हाँ का और रियली सॉरी मैम। मैम बहुत अच्छी ऑफिस है। थैंक यू मैम। मैम, मेरा पहला सवाल यही है कि आपने बहुत कम उम्र में, मतलब यंग स्टेज में आपने थिएटर करना शुरू किया और एक्टिंग करना शुरू की। आपकी एक्टिंग की, अदायगी की एक अनोखी दुनिया है जो आपने एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। तो मैं चाहूंगा उससे पहले कि कैसे आपने सोचा कि मैं ये सिर्फ ये इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड नहीं है, पूरी दुनिया मेल डोमिनेटेड है। हमारी सिस्टम वही है, सालों से, हजारों सालों से ऐसी है। तो आई थिंक वो धीरे धीरे बदल रहा है, बट या आई थिंक वी आर इन अ गुड टाइम वेयर एटलीस्ट women are, you know, out and working and educated and demanding the jobs that they want. मैम, जो आप फिल्में करते हो, प्लेस करते हो, मुझे ये जानना है कि उनका क्या पैमाना होता है? क्या देखते हो आपकी ये कल्की के स्टाइल का है या नहीं, इसमें कल्की दिखेगी या नहीं? अगर उसके बारे में आप कुछ फिल्मों में, प्लेस में, कोई भी चीज जब आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ भी, मतलब हर फिल्म और हर किरदार में कुछ तो पर्सनल अटैचमेंट होता है। यू हैव टू फाइंड द ह्यूमैनिटी ऑफ द कैरेक्टर। लेकिन काफी सारे किरदार मेरे से बहुत अलग है, मेरे जैसे नहीं है। तो एज एन एक्टर वही तो चैलेंज है कि जो आपसे बहुत दूर है और लगता है कि हम उसको समझ नहीं सकते, उसको पास रखो और उसको समझो। वो है एक्टर का काम। ओके मैम, 2009 में आपकी फिल्म आई थी ड्यूटी, तो वो कैसे मिली? अगर उसके बारे में कुछ आप बताना चाहो, और कैसे आपने कैसे कहा कि मुझे हाँ, क्या पॉइंट रहा होगा कि मुझे इस फिल्म के लिए हाँ कहना? अरे मैं तो बस खुश थी कि मुझे ऑडिशन मिल रही थी। मैं तो स्ट्रगल कर रही थी, थिएटर कर रही थी और एक फिल्म के लिए ऑडिशन हुई थी। और एक्चुअली उस समय मेरी हिंदी बहुत बुरी थी, तो मैं ऑडिशन अंग्रेजी में दिया था। और फिर एक महीने बाद एक ट्यूटर के साथ मैंने काम करने के बाद, उसके बाद मैंने हिंदी में ऑडिशन दिया। तो इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू गेट द रोल, बट आई थिंक मैं बहुत लकी थी। Okay. मैम, आपकी दो मुझे बड़ी मसाला फिल्में हैं जिनको मसाला फिल्में कहा जाता है, ये जवानी है दीवानी और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोनों के बारे में कुछ कहेगी कि मतलब उसमें भी एक हमको अलग कल्की देखने को मिलती है? हाँ, आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ उस रिस्पेक्ट में भी, बिकॉज वो है कमर्शियल फिल्म, लेकिन काफी यू नो अलग तरीके के कमर्शियल फिल्म्स है वो। आई डोंट नो, जोया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग राइटर, उसके कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और स्टेरियोटाइपिंग ज्यादा नहीं करती है वो शी ट्राइज टू ब्रिंग लाइक अ ह्यूमन एंगल टू ऑल द कैरेक्टर्स। ये जवानी है दीवानी मुझे बहुत मजा आया। ऑब्वियसली शूटिंग हम एक महीने मनाली में थे, एक महीने राजस्थान में थे। यू नो, इट वाज रियली अ फन शूट। सो आई थिंक या इट्स बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। द गर्ल इन येलो बूट, उसमें आपने उसका जो स्क्रीन प्ले है वो आपने साथ में लिखा है। हाँ, वो फिल्म बताइए, वो भी द गर्ल इन येलो बूट्स वाज समथिंग व्हिच अनुराग हैड इन माइंड। और फिर उनको चाहता था कि कोई लड़की से पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, तो ही वांटेड मी टू राइट फॉर हिम। और मैं तो अनएम्प्लॉयड थी उस समय, तो मैं बहुत खुशी से लिख रही थी। और या आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई एम ग्लैड वी डिड। मैम, मैंने शंघाई भी देखी है, उसमें हमको एक अलग कल्की देखने को मिले, एक एक्टिविस्ट कल्की जो रियल लाइफ में भी मैं देखता हूँ कई सारे। जैसे अभी भी आपको कहीं जाना है, तो वो जो एक एक्टिविस्ट कल्की उसमें फिल्म में शंघाई में दिखी, तो उसके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहो। Yeah, I think दिबाकर बैनर्जी is also a very very powerful director. वो हमेशा कुछ अलग तरीके की फिल्म्स बनाते हैं। और Shanghai is based on a very political book called Z, a Greek book, which is remade into this Indian context. और काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए हमने, मैं और इमरान हाशमी और अभिदेल साथ में वर्कशॉप्स किए। और I think it's the kind of film where you get to explore a very different character. You know, I've never lived in rural India like Shalini's character. I've never done the things she did. I've never been in love with this older doctor
activist person. So all these are very, very interesting things to look at and explore as an actor. फिर मैम एक फिल्म आपने की, एक थी डायन, और वो कम्प्लीटली अलग थी, मतलब जितनी भी हमने बातें की उसमें वो एक थी डायन, कहाँ आपको क्या कुछ बताइए। हाँ, मैं तो वो तो सबसे नेचुरल है मेरे लिए डायन बनने। नहीं, I don't know, for me, as an actor, versatility वही तो important है। और एक थी डायन, मेरी पहली हॉरर फिल्म थी। मैं तो विशाल भारद्वाज की बहुत बड़ा फैन हूँ, और वो प्रोड्यूस कर रहा था इस फिल्म को, कन्नन नायर ने डायरेक्ट किया था। और again, I think the opportunity to work with great people in our industry, is motivation, as well as, अलग-अलग genres में काम करना चाहती हूँ। मैम यहाँ पे मेरे को ये पता नहीं, पूछना चाहिए नहीं कि डू यू बिलीव इन गोस्ट, और कभी आपको डरावना वाला ऐसा फील हुआ? भूत, हाँ, मुझे मतलब कभी भूत नहीं देखी, और मुझे देखना चाहती हूँ। आई थिंक कि I want to believe in ghosts. I don't know. I mean, I feel like sometimes कि कुछ अलग energies होते हैं, और कभी-कभी हमको लगता है, मतलब nervous energy होता है, या like happy energy होते हैं, अलग-अलग energies है, वो कहाँ से आता है मुझे पता नहीं, लेकिन साबुत अभी तक मैंने देखी नहीं कि ghost है। और डेथ इन द गंज, उसके बारे में अगर डेथ इन द गंज, ऑफ कोर्स कोको की पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर है, और ये 1970s में सेट है। So it was quite something to become a character from so far back in time. कपड़े, मेकअप अलग थे, and I had to speak a little bit of Bengali for the role. और I think कोंकणा एक बहुत ही, she's a perfectionist, she knows exactly what she wants. So it was challenging to work under those kind of like parameters where somebody is very, very specific कि यही चाहिए, ऐसा चाहिए, but it's also like brings out a different side of you. मैम एक बहुत बढ़िया फिल्म आपकी मार्गरीटा विथ अ स्ट्रॉ, मैंने उसका जब ट्रेलर दे रोंगटे खड़े अभी भी देख के बात कर रहा हूँ, जो फीलिंग आती है, वो जो फिल्म थी मैम, उसमें जो आपने कमाल किया है, तो वो फिर एक उसी दौर में स्टीफन हॉकिंस की एक फिल्म आई थी उनके ऊपर जो बन रही थी, तो वो जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हाँ, तो वो जो मतलब कैसे मैम आप उसके बारे में बताइए वो फिल्म। और मार्गरीटा विथ अ स्ट्रॉ, हाँ, मुझे बहुत डर लग रही थी जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी कि मैं कैसे ये कर सकती हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो मैं और सोनाली ने डिसाइड किया कि हम 6 महीने के लिए प्रेपरेशन करेंगे रोल के लिए, और अगर ठीक नहीं हूँ हम कैंसिल करेंगे फिल्म। वैसे हमने सोचा, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट इफ इट्स नॉट ऑथेंटिक। And my director's cousin, sister Malini Chib is sort of the inspiration for the story. तो उसके साथ मैं बहुत रही, उसके साथ I went to her place of work, I lived with her. So I got the chance to work with someone who had cerebral palsy and work very closely with them. 6 महीने के लिए preparation किया, और फिल्म किया। I don't know, yeah, how we managed, but we did. मैम उसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक और सवाल, जब वो फिल्म कंप्लीट हुई और जब पहली बार आपको स्क्रिप्ट आई थी, तो जब कंप्लीट हुई कि ना पैकअप, ये वर्ड सुना आपने, व्हाट वेंट थ्रू, और जब फिल्म आपने देखी, व्हाट वाज द फीलिंग? एक्चुअली मैं बहुत खुश थी, क्योंकि इतनी ड्रेनिंग थी। ड्यूरिंग द शूट 2 महीने के लिए मैं व्हीलचेयर में ही बैठी रही थी। आई डिडंट गेट आउट ऑफ कैरेक्टर बिकॉज ऑफ समथिंग मालिनी हैड सेड। शी सेड कि आपकी दिन खत्म होने के बाद आप उठ के चल सकती हो, मैं नहीं कर सकती। तो मैंने उसको सुनने के बाद आई डिसाइडेड टू स्टे ऑलवेज इन द व्हीलचेयर, and it does have a great effect on frustration and a lot of things, communication problems with people. So yeah, जब वो shoot खत्म हो गई, I think we were in New York on Coney Island beach, and I just got off my wheelchair and jumped and ran into the water. So it was like a load off. Yeah, and it was a really long journey, but it's only a small part of my life, in the sense that that's somebody's whole life.
मैम वेटिंग एक फिल्म की, फिर आपने एक ड्रामा किया कि स्केलेटन वुमन, अगर उन दोनों के बारे में। Skeleton Woman, yeah. मैंने वो लिखी एक्चुअली जब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो तब तो मैं लिखती हूँ. So I was unemployed after Devdi and I had no work and my friend Prashant Prakash is also an actor. तो हमने सोचा हम क्यों ना कुछ लिखें अपने लिए so that we can cast ourselves and that's what we did with Skeleton Woman. एक साल के लिए हमने वो प्ले touring किया और then I also wrote The Living Room which was another play. Yeah. जी, उस पे आ रहा था, वो आपने डायरेक्ट भी करा है। तो हाँ, वो पहली शायद- बार हाँ, डायरेक्शन पहली भी बार करते इसका- और my God इतना difficult है. I have a lot more respect for directors after having tried to direct. I think actors are like children; they need a lot of attention. But no, it's an interesting challenge because directing is like being a parent. You have to look after everything. You know, from music, production, you know, to your actors, to making big decisions which. You know, you might just make the wrong decision and then you have to stick with it because you've made the decision. So it's very difficult. There's no manual or rule book on how to direct. I don't think it's just experience, but it was very difficult. मैं मस्ती में सवाल पूछ रहा हूँ, पहले इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद जो कल की एक्ट्रेस थी, डायरेक्टर बनने के बाद जो कल की एक्ट्रेस थी, उसमें कितना डिफरेंस, मतलब I हम पढ़ते हैं ना कि वो I टाइम hope कि मैं बेहतर एक्टर बन गई हूँ, कि मैं ज्यादा ग्रेटफुल बन गई हूँ. Because yeah, I think that you know you have to have amazing trust in your director, and I try to do that more now. ये डायरेक्टिंग करने के बाद मुझे समझ में आया कि डायरेक्टर को फाइट नहीं करना चाहिए. उनको समझ, of course you have to understand each other. It's not that you have to agree with everything that your director says, but you have to at the end of the day, it's his baby or her baby. The director is the bop of the show and you are one part of the show. मैम एक मैंने अभी 5 मिनट का देखा, प्रिंटिंग मशीन, अमेजिंग, मतलब स्पीचलेस, आई एम लाइक व्हाट, और वो जो टक आपने जो टक हाँ वो मैम उसके बारे में बताइए. इतना बेहतर, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं मैम. बॉलीवुड में मैं जब देखता हूँ और तो मुझे लगता है वो सिर्फ आप ही का, तो उसके बारे में प्लीज. नहीं मैम प्लीज मैम उसके बारे में प्लीज मुझे जानना. Yeah, I don't know, from a very young age मैं तो पोएट्री लिखती थी मेरे लिए, and it's my way of, I think मैं काफी shy थी as a kid, and it's my way of just trying to express what I can't express. Sometimes you feel really angry or really upset about something, but उस समय वो शब्द नहीं आते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहे कैसे बोलूं, तो तब मैं लिखती हूँ. और that's how printing machine happened, that's how noise happened. I write things down which are hard to always articulate in the moment, and it makes me understand myself better, it makes me understand the problem that I'm dealing with better and how to face it better. मैम एक सवाल, एक फिल्म जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो, ऐसी कौन सी फिल्म आपके लाइफ में आपको लगती है? I think Margarita with a Straw, because on the one hand, of course, the film did really beautifully well and I got a national award for it, but also on the other hand, it made me realize the importance of Riyaz as an actor. You know, when you spend 6 months on a role, actually जब हम शूट कर रहे थे, एक तो टेक्स में खत्म होता था क्योंकि हमने 6 महीने के लिए प्रेप किया था. तो जब हम शूट में थे, I was already so much in character that it was, you know, it was a breeze to shoot in that sense. And I feel that's something we don't give enough time to prepare for our characters in a lot of our films. मैम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिनके मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं जाना है, तो प्लीज आप थोड़ा उनके बारे में बताइएगा. एक है नेक्ट है, लव अफेयर है, जिया और जिया है, फिर लव अफेयर तो कब से शेल्फ हो गया, मुझे पता नहीं वो होगा कि नहीं. दैट वाज सोनी रज़दान, शी हैड रिटन अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, बट मुझे लग रहा कि वो एटलीस्ट नाउ अभी के लिए नहीं होगा. Then what else? एक आप पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो, आजमाइश. उसके मुझे, क्योंकि मैं पाकिस्तान गया नहीं और आपको जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे जो हम पढ़ते हैं कि दो चार वहाँ पे एक तो साइड सिचुएशन हम पढ़ते हैं कि एक तो बम फटा है, सिचुएशन ऐसी. हाउ इज लाहौर, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, क्यों इतना, you know it's similar, and actually the terrain is similar, the people are similar, obviously our language is similar. But it's been years of political conflict, or
there is a serious problem in Pakistan of feudal power, where the great politicians are also landlords. Most of them are landlords, and they own so much land that they kind of own the people of that land. Many hundreds of villages just work for that landlord. So it's like how we used to have a zamindar system here. It still exists in Pakistan, and that's the political structure that has made Pakistan what it is today. And it's a very sad situation. And why we wanted to explore Pakistan, India, is because are we also going into fundamentalism today in our country? Do we want to be like what has happened to Pakistan? Are we going to counter terrorism with more terrorism? What is the solution? So we were just looking at those questions, and that's how we made Azmaish. And it's finished. The documentary is complete. वो पता नहीं कब रिलीज होगी. मैम मुझे अब फिलंथ्रोपिस्ट कल्की के बारे में जानना है. बहुत फिलंथ्रोपी करते हैं मैम. नहीं, मैं पता नहीं आएगा. I don't call it philanthropy. I just call it like as a work of an artist. Yeah, like we are here as artists to express things better, to make our point of view understood, to communicate in different alternative ways. Some people do it through painting, some people do it through writing. I do it through performance. That's my way of doing it. Okay. और मैम पोएट्री भी करते हो तो अपना सारा गुस्सा वहीं उतारते हो कि मैंने इन्हें बहुत गुस्सा है. बहुत सारा गुस्सा है. I take it out on my poor friends and family also, and random strangers also sometimes. But I have a lot of love too for everybody, so it's okay. Gotta balance the thing. मैम मैं अब रैपिड फायर खेलने जा रहा हूँ. आई होप कि योर बेस्ट परफॉर्मेंस मार्गरीटा विद स्ट्रॉ और डेवडी. Margarita with a straw, just because the amount of physical transformation as well as the emotional weight of the role. Okay. Latest Indian film you wish you were a part of. Latest Indian film. हाँ. I don't know what was a film that I really liked. I liked Kapoor and Sons, but I don't know what role I would play. I liked Queen, but that's not very latest, no? Tell me some films, Pink? no, from now. Pink was cool. Pink was fun, but I would have wanted to play Amitabh Bachchan's role, which is not. That was the coolest role in the film, I think. Okay. Ma'am, favorite director you have worked with? Zoya Akhtar, Divakar Banerjee, Konkona Shin Sharma, or Ayan Mukherjee? Who are my favorite? Yeah. I love all of them. I can't choose. Yeah, they're all amazing. I love all of them. Recent Bollywood movie you enjoyed? I can't remember. आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म कब देखी थी आपने? नहीं, मैंने देखी, but I can't say. It was very bad. What are the films this year? Dangal? I haven't seen Hindi medium. I heard it's nice. Dangal? Dangal was nice. That was last year. Bahubali? Bahubali I didn't see. Sorry. Dangal was not. Dangal was Too late. Sorry. I so bad. Yeah, Hindi medium I have heard is very good. Okay. I should see it. Your favorite Bollywood singer? Arjit Singh is good. I like him. I don't know. I like Anushka Manchandani. Okay. Which Bollywood celeb you had liked to work with? I really enjoyed working with Ranbir Kapoor. I think he's a very spontaneous actor. Your best mate from showbiz? Best mate from showbiz. Sorry. Zoya. I like hanging out with Zoya. मैम चलते चलते आप पोइट्री बहुत अच्छी लिखते हो. अगर आपको कोई भी पोइट्री जो आपकी लिखी हुई याद हो तो मैं चाहूँगा कि इस इंटरव्यू का एंड आपकी कोई एक अच्छी सी पोइट्री के साथ. I think I can't finish. I कोई भी अगर can't 2 लाइन say- 3 लाइन okay. कुछ भी. I live in a noisy neighborhood. Not that my I used to live in a noisy neighborhood. Not that my
present residence is any less noisy. I mean, we live in a noisy country, but the noise of my previous place remains particularly distinct for its ability to sink several so-called socially separate situations into one continuously incessant ring. It begins at the brink of dawn, mid-dream, closed eyes blinking at the moment of the rising sun with the azan. A long, clear Allahu Akbar of a nearby mosque, which even before the prayers are done is overlapped by the bustling of fisherwomen as they drop their baskets, sit on their haunches and tear out guts from their fresh fishes, competing with one another. Machi, 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 machi. Ding, 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 ding. Brass bells on a loudspeaker take over at the mosque-facing mandir, followed by reverbing morning shloks. Om Purnamida, Purnamidam, Purnat Purnamudachyate. And hold that note, a blind man with a bowl and stick carrying a kurta and goofy outfit crying, Ya Rasool Paake Sadke Mein Dila Do. Ya Rasool Paake Sadke Mein Dila Do. Only to be drowned by another sound, the recently procured electronic bells of the adjacent church that doesn't want to be left out of the divine cacophony. O come, all ye faithful, joyful and triumphant, O come, O come. Hey, chickeny chameli, chale. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. That was very long, Thank sorry. you, ma'am. Thank you. Nice talking to you, ma'am. Thank Nice you. to talk to you. Thanks so much.